This is the confusion you are creating. Whether you have no information. That's what I have just been informed. Then you better sit down. Fourth, who is the principal secretary of that department? I am seriously concerned about Sonrekha River as well as ensuring that there is a proper sewage line and water not gets into mixed up or pollutes the Sonrekha River water. Mr. Commissioner, आपने 625.18 करोड़ का जो भेजा है, आपको इसका इल्म नहीं था? Fail to understand? You people are IAS officers. You are not supposed to know what kind of proposals to be sent on Namami Gange. What was the last order? First, we are taking up the Swarnarekha? Yes. All right. Order sheets कहाँ बाबू साहब? The detailed order was passed on 22nd of November. Yes, my lord has going through the compliance submitted by the all the stakeholders, my lord. हाँ. Because the proposal was sent to the Namami Gange, so the opinion of the honorable court that the in respect to sewage line, the proposal should be sent to the state government because it is a state subject. So that's proposal we have submitted, my lord. We have submitted compliance report yesterday. Annexure C1 is the proposal which we have sent to the Department of Urban Administration as per the direction of the Honorable Court. So now the fund allocation in respect of the trunk lines of the sewer line which has to be laid parallel to the, for cutting the flow to the Swarnarekha is pending with the state government. No, who's for the government? Late legal order. What is your instructions? I am just informed, my lord, that the proposal they have sent interdepartmentally. So Whether you have no information. that's what I have just been informed. Then you better sit down. Yes, Mr. Gupta, any assistance you want to give? Yes, sir. Well, Now, Mr. Khoth, who is the principal secretary of that department? Principal Secretary of Urban Administration, Mr. Neeraj Mandloi. Near Bandoi. Now he has to answer. So we'll call him. Mr. Modi has no instructions. Yes. Sir, the sewer issue is quite different from Swarnarekha. हाँ. So corporation is mixing it up both. Hmm. So they have sent a proposal to Naman Gange that sewer line is also to be included in that. And they have refused, as per my information. They are only for Naman Gange. They will concern with only Swarnarekha. Yes. So they have denied it, in fact. They have denied. Denied. All right. Now this confusion is created at whose instance? Corporation. There is no confusion. My lord, may kindly. Mr. Khoth, let me tell you very frankly. My lord. The moment I smell Yes, sir. some mischievous act to scuttle our attempts My lord. for revival of the river and ensuring safe and insulated flow of sewage, I will not spare even a Jamadar. What to talk of your commissioner or the principal secretary or for that matter chief secretary. I'm great. Please take it on a very serious note. Yes, sir. I am seriously concerned about Sonrekha River as well as ensuring that there is a proper sewage line and water not gets into mixed up or pollutes the Sonrekha River water. Please have this thing in mind. Yes, sir. Do not create any confusion from your end Yes, sir. or for that matter any of the stakeholders. We will not spare anybody. You all have to be very, very sincere. Because if we have taken up the issue, it is not only for coverage in newspapers. It is for ensuring that the residents of Gwalior at least have this chance to see the revival of this river
which is required for the prosperity and well-being of the residents of the Gwalior city. It is the duty of the court, rather it's your obligation not to do nonsense things which resulted into that the river is reduced to Nala in decades time. Yes. It's because of inaction, unscrupulous attitude and don't care mindset in the matter of civic amenities. This reflects how corporation so far has worked, ensuring about the proper sewage water flow and secluding from the flow of the Swarnarekha river. Now since you people have not acted, now we have been called upon to ensure that you act in accordance with law. We are not going to do it. You will do it, but we will ensure you do it in a right manner. Whether you or Namami Gange project authorities or the government of India or government of Madhya Pradesh. PILs are not taking up only for the, it is not a fashion litigation so far as this matter is concerned. It is a serious matter which concerns the residents of Gwalior. Let us be very clear on this. Yes. Now first you tell me which report has gone, which request has gone to the Namami Gange Well, this is on the last. and who will represent Namami Gange? Yes. Now what is the project, what is the report, request they have sent? Was on this board, madam. This report says that they are asking the sewer line to shifting sewer line, which is not in the project or normally. Now show me your communication. Yes, this is just this is. एक कॉपी और दीजिए. उसका urban administration पूछा है। Now who had sent this proposal? Mr. Commissioner, are you not aware of what kind of proposals you are supposed to send? आपने 625.18 करोड़ का जो भेजा है, आपको इसका इल्म नहीं था कि ये मैं क्या भेज रहा हूँ और वहाँ से क्या अप्रूव होके आएगा? और उनका कहना ये है कि इसमें से 599 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो तो आपका सीवेज लाइन का है और ड्रेन वाटर का है और उसका नमामि गंगे से कोई लेना देना नहीं है। मात्र 27 करोड़ रुपए का आपने उसमें जो प्रपोजल भेजा है वो भेजा है स्वर्णरेखा रिवर का। ऐसा क्यों किया आपने? Later on, it is sent to state government also. अरे what state government will do with this? I fail to understand. अरे you people are IAS officers. You are not supposed to know
What kind of proposals to be sent on Namami Gange? This is the confusion you are creating. Why did you do that? If you wanted to send your sewage proposal and drain water proposal to government, why did you add on to the Namami Gange project? Where is the revised proposal for Namami Gange? Where is the revised proposal for Namami Gange? स्वर्ण रेखा रिवाइवल का पैसा कितना चाहिए आपको, आपने लिख के दीजिए, दोबारा भेजा इसके बाद 13-12 के बाद क्या हुआ? सर 13-12 के बाद ये जो इनका जो रिस्पांस है नमामि गंगे का, for the purpose of sewerage line and their cutting off from the main line of the flow of the stream. Mr. Counsel, yes, sir. Don't tell me stories. My lord. This communication from Ministry of Rashtriya Swachh Ganga Mission suggests that you are utterly confused. The total exercise was futile. First, Government of India will only give you this Namami Gange project mission will give you money only for revival of Swarna River. It will not spare funds for sewage line or drain water. Who represent? Your officer has come. Who is the officer? Did you have any meeting with the commissioner? Last time you had come here, na? So you had asked for some proposal. Whether did they ask for any meeting with you? No, sir. They asked me what is their response. So I coordinated with the ministry. They said कि उनका जो major portion है वो drainage और sewage network. ये इनका proposal कब का है ये? अक्टूबर। तो अक्टूबर के पहले तो हम लोगों ने कॉग्निजेंस ले लिया है ना केस का, तब तो मैटर पेंडिंग था यहाँ पे, तो क्यों जोड़ा आपने इसमें? आपने कुछ समझाया नहीं था कि सीवेज लाइन का और ड्रेन वाटर का इसमें मामला नहीं जुड़ सकता है? नहीं सर, बात हुई थी, मैंने बताया था एसटीपी के लिए ही वो पैसा देते हैं, क्योंकि वो जो रिवर वाटर है उसमें मिक्सिंग ना हो, एसटीपी प्लांट लगा के उसको प्योर करने के लिए। नहीं तो एसटीपी प्लांट का तो इसमें है ही नहीं। 27 करोड़ का है, बात उसी का ही है। 599 करोड़ आपने दे दिया सीवेज लाइन का। क्यों कर रहे हैं भाई इस प्रकार से? आप क्या चाहते हैं, आप बताइए। What do you want? We'll coordinate with Namami Gange and as per. नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं। अभी तक आप क्या करते रहे? अभी बुद्धि में ताला लगा हुआ था क्या? क्यों किया आप लोगों ने इस तरीके से? अगर आप चाहते हैं मुकदमा इस कोर्ट से चला जाए तो हम जबलपुर भेज देते हैं। कोई नहीं चाहता। नहीं, इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते आप। अगर आपको लगता है बेंच इनकन्वीनियंट है तो हम मेन सीट भेज देते हैं इसको, फिर वहां आप अभ्यास करते रहिएगा आप। भाई, व्हाई आर यू वेस्टिंग आवर टाइम? it is very disappointing. मतलब आप लोग की सीरियसनेस है, केवल यही है पास ऑन द बक। अपनी प्रॉब्लम किसी और के पाले में डाल दो, उलझे मामला उलझता रहे। मिस्टर हर्ष सिंह, आपको देखना चाहिए था ना, ये आप किसकी एडवाइस में आपने भेजा ये? सर इसमें जब कोर्ट में केस था उसके बाद मीटिंग हुई है लगातार, और मीटिंग होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि इसके लिए फंड की आवश्यकता है सर। तो 2 जगह भेजा, एक नमामि गंगे में भेजा, उनका प्रपोजल ये आया कि हम एसटीपी प्लांट के लिए दे देंगे, बाकी हम सीवर के लिए नहीं दे पाएंगे। ये आपने कभी प्रपोजल भेजने के पहले पूछा उनसे? सर हम लोग कोऑर्डिनेशन में क्या कोऑर्डिनेशन में थे आप? अगर आप कोऑर्डिनेशन में होते तो वो आपको बताते कि भाई आप इसमें सीवेज वाला मसला नहीं डाल सकते। सर उन्होंने ये बताया था कि आप भेज के फिर हम लोग इस पर विचार करेंगे, विचार करके फाइनली रिजेक्ट कर दिया हमारा प्रपोजल। वो लेते कि यही प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है।
जहां कुछ मसला हुआ कमेटी बना दो। कभी किसी को निर्णय लेने की क्या कहूँ मैं इस चीज़ को, आई मीन दे डू नॉट हैव एनी सेंस ऑफ टेकिंग अ डिसीजन। हर आदमी अपनी कलम बचाता है, सब गोलमोल, सब गोलमोल। भाई कुछ तो अपने अंदर, देयर शुड बी सम कॉन्शियस इन यू टू टेक अ डिसीजन। You may be wrong while taking a decision, but one has to take a decision. And if you don't take a decision, things will move on from one table to another table. It requires application of mind. Why one should not apply its mind? What for we all are paid? If we as judges do not decide the cases, and just pass an order, decide the representation, do this, do that, are we justifying our salary? No. We have to take a decision, this way or that way. Similarly, you are expected to decide, maybe in a different manner. But once we have taken a cause, public cause, then in all fairness, you should apply your proper mind. How to go about it? Why we are sitting here? Only to facilitate. अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश आपको कोऑपरेट नहीं कर रही है, फंड्स नहीं दे रही है, तो वी आर हियर टू इंश्योर दैट यू गेट फंड्स। आपका काम तो काम करना है। जो जहाँ ऑब्स्टेकल्स हैं, जहाँ हिकअप्स हैं, जहाँ बॉटल नेक्स हैं, वो हम क्लियर करेंगे। बट ऐसे ही आप करोगे तो कैसे काम होगा? अभी कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी है, सुनिए मेरी बात आप, वो रिपोर्ट बनी है जिसमें नमामि गंगे के ऊपर कितना खर्चा आएगा। वो कहाँ है, वो रिपोर्ट कहाँ है जिसमें ये होगी हाउ मच मनी इज रिक्वायर्ड फॉर रिवाइवल ऑफ स्वर्णरेखा रिवर ओनली? Where is that document? Sir, for that sewer connection, we have already sent to the state. फिर वही वाली बात। For revival of Namami Gange, we are again coordinate with. No, the, you please. send the- It means you have not prepared a report so far. You do not have any idea. You have not worked as to how much money is required for revival of Swarnrekha River so far. Only you have made a provision of STP for purifying of the water. जिस काम के लिए हम यहाँ बैठे हैं उसका उस पर कोई एक्सरसाइज हुई ही नहीं। And you want to attend that conference at 1 o'clock. If you don't have any proposal, what kind of conference will you be attending? Who is conducting the conference? The chief secretary. For what? Chief Secretary, Government of India, Madhya Pradesh. Urban administration for allocation of. Your Chief Secretary will give you money for this Swarnrekha River? Solid waste. No, I want you to tell me whether your Chief Secretary will give you money for Swarnrekha River. No, it's state has to issue. Huh? State has to issue the funds. They are only coordinating on. I am asking this question. Yes. Whether the state government will release the funds for revival Swarnrekha River or not. But they will do it for the sewerage, for the Namam. मतलब मिस्टर खोद आप भी उतने ही उसी फ्रीक्वेंसी में चल रहे हैं जिस फ्रीक्वेंसी में आपका डिपार्टमेंट चल रहा है। आप सवाल नहीं समझ पा रहे हैं हमारा। स्वर्णरेखा रिवर के रिवाइवल के लिए राज्य शासन आपको पैसा देगा क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए। That will be provided by Namami. तो बार बार मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ। आपने कहा साहब नमामि गंगे का हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होने वाला है, उसमें हमें प्रेजेंटेशन देना है। आपका प्रपोजल तो वहाँ गया नहीं अभी तक। प्रपोजल 27 करोड़ का आपने एसटीपी का दिया हुआ है, तो किस बात का आप प्रेजेंटेशन करेंगे और किस बात का वहाँ पे प्रपोजल एक्सेप्ट होगा आपका? सब हवा में बात चल रही है।
that is for solid waste management also. We will exclude that proposal from the Namami Gange project and हद होती है, तो एलिमेंट्री चीजें हैं. separate revise 10 ऑफिसर खड़े हैं यहाँ पे, सब खड़े हैं विद लॉन्ग फेसेस. separate proposal for revival we will send, well, in coordination with the Namami Gange offices. And this sewerage project has already been sent to the state government and the This is how they are working. will do it. Will do it. सेकेंड क्या है? Second is solid waste. नहीं, थोड़ी देर बाद में आएगा. पहले सीवेज लाइन का बताइए हमको आप. हाँ, सीवेज लाइन का मतलब the proposal as per the direction of the honorable. दिखाइए सीवेज लाइन क्या प्रपोजल है आपका. Yes, madam. We have filed it yesterday, madam, the compliance report. Forget about compliance report. You show me what is the sewage report, how much money is required for sewage separate line and for flow of drain water. But for sewerage, 567 crore has been sought from the state government हाँ. for cutting up the lines which are flowing the sewerage in the flow of the stream of the river, for making a separate. I do not want stories. Yes, I just want your plan. yes. That what is your plan for providing separate sewage, and what would be the place where you will be collecting, you will be flowing this sewage water, and thereafter solid waste management. Yes. So where is your total plan? जो प्लान बनाया है सर सर्वे करने के बाद, उसमें 13 किलोमीटर की एक पहले से लाइन डली हुई सर 30 साल पहले की, जो जगह जगह पे टूट गई सर देखा में सर. इसमें पूरी ट्रंक लाइन एक रिप्लेस होगी सर. ट्रंक लाइन का डायमीटर बहुत वेरी करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवेज आता है सर. तो फ्रॉम 1800 mm से लेके 24 mm तक की डिज़ाइन कर दी गई है लाइन सर. ये लाइन प्लस जहाँ जहाँ से नाले में सीवेज आता है सर, वो भी लाइन हम लोग इंक्लूड करेंगे. ये पूरी लाइन लेके सर हम लोग सर एक बीच में प्रेशर सिस्टम लगाएंगे, उसको लेके जलालपुर ट्रीटमेंट प्लांट पे ले जाएंगे सर. हमारा जो अभी ट्रीटमेंट प्लांट है सर, वो अभी उसमें बहुत कैपेसिटी है सर, 40 MLD अभी जो हिस्सा आएगा वो उसको कैटर करेंगे सर. उसके अलावा फिर एक और ट्रीटमेंट प्लांट वहीं पे जलालपुर के पास जमीन हमने देख ली है, वहीं पे लगेगा. तो ये पूरी सीवेज जितना आएगा सर, ये पूरा जाके फिर ट्रीट हो जाएगा. नहीं तो ये सीवेज लाइन ले करने का जो काम है, इसकी वजह से हमारा स्वर्ण रेखा रिवाइवल का तो डिस्टर्बेंस नहीं होगा. तो सर नगर निगम के स्कोप में तो यही है सर कि पूरा सीवेज जितना भी पानी गंदा जा रहा है उसको हटाना है सर. ये उसका तो मेजर पार्ट है सर, क्योंकि सीवेज ही लाइन बहुत पहले डली है, 4 से 40 साल पहले सर. वो जगह जगह से डैमेज है. नहीं तो वहाँ पे ब्लॉक करने के पहले आप रास्ता निकालो, पानी जाएगा कहाँ? भाई ऐसा है कि किसी चीज़ को बंद करने के पहले ये तो ऑल्टरनेट निकालो कि वो पानी आखिर जाएगा किस तरफ. अभी भी सर पानी जो जा रहा है सर, वो हमारे प्लांट में पहुंचता है, पूरा नहीं पहुंच रहा है, जगह टूट गया, वो हम कंटिन्यू करेंगे. हम जो लाइन डाल रहे हैं सर, ये लाइन इसको डिस्टर्ब करते नहीं. अलग से जो इसका बैंक का शॉर्ट रेखा बना है सर, बैंक इसका, उसमें से हम लोग लाइन डालेंगे डिजाइन करके. अभी तो आपको 2 काम करने हैं. जितना सॉलिड वेस्ट और सीवेज वाटर स्वर्ण रेखा रिवर की लाइन में जा रहा है, उसको ब्लॉक करिए. उसको ब्लॉक करके उसका डाइवर्ट करिए पहले उसको आप. ये तो जो सेपरेट लाइन आप बना रहे हैं, ये तो लंबा प्रोजेक्ट है आपका. लेकिन अभी जो हम रिवाइवल की बात कर रहे हैं, उसके लिए पहले जो आउटफ्लो है उसके अंदर रिवर ट्रैक पे, उसको ब्लॉक करिए आप. और उसको ब्लॉक करके डाइवर्ट कर रहे हैं ना आप. Sir, actually, the practical problem is that blocking will not serve the purpose until there is a fresh line connecting to the Jalalpur for the sewage treatment plant. Because the flow and the amount of sewage which is coming, it is not possible from the old line to again send it to this destination place. Because they are not reviving. Those lines are choked. Those lines are of 40 years back. And they are, at places they are broken. So how long will you take? But the project is of 2 years, because it's a 13 kilometers both sides, 26 kilometers. So for 2 years there shall be no work done for revival of the Swarnrekha river. For 2 years you will be working with Chief Secretary regarding funds. Then there would be some comments, some clarifications, and on papers things will move for another 5 years.
So you want to scuttle the attempt of this court to ensure that there is a progress in the work. For last 6 months we are dealing with the matter, and up till now you have not been able to get the funds. And to top it all, you created confusion at Namami Gange level also. So you do not want to work. Our efforts to ensure that the track is cleared, there is a proper plantation on both sides, all will go futile. All right, then we will call your secretary. Then he will answer, because we will not leave it in lurch. We will reach to a logical end. If you are not able to work, then you disqualify yourself to be here. Forget about it then. Yes, Mr. Modi, who should be called here? If commissioner is not being helped by the secretaries at the Bhopal, at the state level, then we will call somebody who is able to, who is accountable for the civic amenities in Gwalior district, Gwalior city. I need someone who can take You have sufficient funds. Let me now be very clear on this. To dole out. Don't force me to speak more. But you do not have funds for revival of the drainage system, for providing that solid waste management machine. 32 करोड़ की वो मशीन आनी है, उसके बारे में क्या लिखा आपने? उसके बारे में क्या आया उसके बारे में? उसके बारे में प्रपोजल भेज दिया फॉर एडिशनल सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट एट हाँ। केदारपुर में. We have filed yesterday. क्या हुआ उसमें? क्या हुआ उसमें अभी वो तक? अभी इट इज पेंडिंग विद द गवर्नमेंट. तो कब तक पेंडिंग रहेगा वो? कब भेजा है आपने? हमने भेजा है सर. वो 5 तारीख को भेजा है सर. 5 जनवरी को भेजा आपने. 5 जनवरी. लास्ट पेशी कब हुई थी? 22/11 के बाद आपने उसकी कंप्लायंस 5/1 को करी है. But according to the officer Malad, because that survey was required to be done by the consultant, and then the proposal has been sent. Mr. Khod, I am not happy at all. Mr. Harsh Singh, please take it on a serious note. Otherwise, we all will be in trouble. Because court proceedings have to be taken on a serious note. If you think that you can do away with, then you are sadly mistaken. You please do it. And Mr. Modi, if this proposal has gone there for release of 30, how much money you want? 100 crore they have already received. From where? From government, this is statement recorded. Mr. Modi, I think today you also we are cutting a very sorry figure for the state today. You know that for last 3 hearings we have been taking the matter on a detailed note, and you have no instructions. Have you ever bothered to read the order sheets? these proposals, if they would give me a copy, I would be able to. What give you a copy? Because they sent. Are you here only to take copy and forward it? Are you post office or what? I'll be able to follow it up. With What followed up? Have you not seen the order sheet? See the order sheet of 22nd of November. No, before that, 5th September is also relevant. Khilkar has appeared. Yes, sir. Read the order sheet. What we have written in the order sheet. Harsh Singh, Commissioner, Municipal Corporation, is also directed to prepare a proposal DPR for installation of another garbage recycling plant at Kedarpur, and proposal be submitted to Urban Administration Department for its sanction immediately. As it transpires during the course of hearing that as on date, total accumulated solid waste is about 6 lakh tons at Kedarpur,
This accumulation is of the period from 2007 till up till now. The plant already installed at the said place has a capacity of 450 tons per day. It may take more than 300 days to recycle already accumulated solid waste, whereas every day collection of solid waste over municipal limits of Gwalior city is about 450 tons. In such circumstances, unless an additional recycling plant is installed, it will be very difficult to tide over the alarming situation in the city of Gwalior due to accumulated solid waste, which has resulted into air pollution and unhygienity in the entire municipal limits. Hence, looking to the gravity of situation, we have a direct that Principal Secretary Urban Administration Department shall give due attention for release of funds to install additional solid waste recycling plant at Kedarpur. What more is required? What more is required? And this order was passed in the presence of the Government Council on 22nd of November 23. And Mr. Harsh Singh, you have sent the proposal on 5th of January. कब सर्वे हुआ आपका? सर अभी हमारी कंसल्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सर। नहीं 22/11 के बाद आपने कब कंसल्टेंट अपॉइंट किया? सर कंसल्टेंट पहले से है सर। तो उसने कब काम किया? सर उसने 15 दिन लिए थे सर पूरा करने, रिपोर्ट हमने वेरीफाई की थी। उसके बाद हमने 2 प्लांट सर, मैं बताना चाहूँ एडिशनली हमारे 2 प्लांट और थे, वो भी हमने चालू कर दिए सर। तो जो हमारा रोज का कचरा है वो भी अब टेकन केयर हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने जो उस दिन बताया वो लिखा गया है नहीं लिखा गया? आपको प्लांट चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं, अगर आपको लग रहा है कि ऑर्डर गलत लिखा हुआ है और आपके पास आप सक्षम है करने के लिए, तो मैं इसको ऑर्डर रिकॉल कर लेता हूँ। उसी डायरेक्शन में सर ये पूरा वेरीफाई करके सर पूरा वेरीफाई। मैं बार बार आप लोग इस मुतालके में मत रहो। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको कॉशन कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट टेक अस फॉर अ राइड, प्लीज़। जब 22/11 में आपने खुद बताया इन चीज़ों को, हमने उसको ऑर्डर शीट में लिखा, तो आपने 22/11 के बाद उसमें 1.5 महीना लगा दिया प्रपोजल भेजने में। हम यहाँ चाह रहे हैं इमीडिएटली काम शुरू हो, वहाँ 1.5 महीने में प्रपोजल जा रहा है। अब आप उसको इम्प्रूव कर रहे हो कि साहब हमारे पास और भी प्लांट है, मैं उसको रिवाइव कर रहा हूँ, उससे और चीज़ें साफ हो जाएंगी। क्यों है? किसको डिफेंड कर रहे हो आप? गवर्नमेंट को? $100 करोड़ कहाँ में मिले इनको? Sir, 5 September for sewage. 100 करोड़? 100 crore. This is in order sheet dated 5th September. सर वो मिले नहीं Where है, is stated? वो अंडर अमृत 2 इट इज इसीलिए रिजर्व sewage. फॉर ग्वालियर अमृत 2 मिले नहीं। क्या करें उसके लिए बताइए? हम किसको बुलाएं यहाँ पर? हम मिस्टर मोदी, आप इसको मैं परसों लगाऊंगा केस फिर से। आई विल हियर डे आफ्टर टुमारो अगेन। You ensure that whatever funds you have allocated to the state, to the Gwalior city is released. And if they are not working, then no wonder I may call your secretary or chief secretary also. Well, if the High Court orders, the sanctity of the High Court order is undermined, then we would be the last person to budge. So neither Namami Gange today has taken off, nor sewage water system has taken off. Everything is moving on a on paper. क्या किया मिस्टर खोद आपने सीवेज के लिए? क्या किया आपने? मतलब as per the direction of the honorable court, we have submitted our project to the state government. हाँ, And now state. कब भेजा है आपने? It is on 14/12. है? 14/12. हाँ, कितना पैसा मांगा है? 567 करोड़। हाँ, जो एक्चुअली वो जो नमामि गंगे को भेजा था उसमें वो सीवर इंक्लूसिव था, इंक्लूडिंग द एसटीपी। सो नाउ द सेपरेट सीवर प्रोजेक्ट हैज बीन सेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर 567 करोड़। मिस्टर मोदी का नोट करिए आप। We have informed them in writing with all the caveats regarding possibility of coercive actions also. But Milits, give me 2 days, I'll Milits. No, if they are not even listening to you, then we know how to make them understand the language of the court.
if they are so unscrupulous that they are not refuse to understand what you are writing them as you are a legal advisor, then we will call them here in person. Who is that secretary? We will call him here. I'll give you one chance. Come back with a positive statement that says this money will be released on so and so date. You may do it in parts. But 599 crores is not required at a go. It requires to be released in a phased manner. But they have to work on it also. What is your work plan? Have you got a work plan? In how many phases will you complete it? कितने फेज में सीवेज लाइन काम खत्म होगा, कितने फेज में, और एक फेज कितने पीरियड का है? फंड छोड़ दीजिए आप, हाँ पीरियड, हाँ 2 years, sir. हाँ It will take from start of the laying of new sewage line, sir. हाँ To shifting of the line, it will take 2 years. Laying of the new sewage line will take around 1.5 years, and shifting will take, connection to the plant will take half a year. Total 2.5 years it will take. So up till when will you start? After you receive the money, the 100 crores which is allocated to you, have you ever corresponded with the government for release of the funds? 100 करोड़ रुपए जो एलोकेट हुआ है उसके बारे में कोई पत्राचार हुआ है गवर्नमेंट से आपका? According to the officer, that Amrut project, which is earmarked for this purpose only, as soon as this project is sanctioned, that amount will be released in phased manner, and then the work will start in a phase. ये अमरूद क्या है? Phased manner. हैं? Amrut is the project of the central government, which is funded through the state government for the purpose of laying of this sewer line. तो अमरूद कोई मतलब अमृत का प्रोजेक्ट है क्या है? अमृत है ना? अमृत है। अगर अमृत प्रोजेक्ट है तो उसको कम से कम कुछ तो इज्जत करो अमृत की, कि सब अमृत के अम्ब्रेला के नीचे सब कुछ चलेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी काम के लिए सिंसियर है तो आप भी तो उतनी शराफत से काम करें। It's a short form of Atal Mission for Rejuvenation of. वो जो भी हो नाम, पर्पस तो पायस है ना? Yes, pious. उस पर्पस को फ्रस्ट्रेट क्यों कर रहे हो? Yes. लोकल लेवल पे नहीं। काम तुम ना करो, बदनाम सेंट्रल गवर्नमेंट हो। यानी आप देखिए नमामि गंगे में 100 करोड़ रुपए मिल रहा है, 200 करोड़ रुपए मिल रहा है, उसको लेना भी नहीं आता आपको, और अमरूद की बात कर रहे हो। Namami Gange will coordinate with the officers of the Namami Gange today itself, our engineers, and then accordingly for revival a separate project report will be sent. You have to do it within 3 days. I am calling it out next Tuesday. I will not pass any order today. I want government's reaction regarding this proposal, your efforts regarding finalization of the project, then I will move further. I am not at all happy today with the kind of response I am getting from all of you. Yes, who is from PWD? WRD. WRD, हाँ. क्या किया आपने वहाँ पर? चैनल कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट किया आपने? है? हाँ हाँ। तो ये सारे पूरे रास्ते में कहीं सीवेज पानी आ रहा है उसमें? ये मिस्टर मोदी खुद, हाउ विल यू एक्सप्लेन दिस? मतलब सीवर आता है फ्रॉम द सिटी, दिस इज ऑल आउट ऑफ द सिटी। हाँ, अभी वहाँ से कितना दूर बचा है सिटी आने में? वो हनुमान बांध से सिटी स्टार्ट होता है। तो हनुमान बांध तक आ गए आप? अब उसका आगे किसे बनाएगा वो, जब तक पानी जब तो सूखेगा नहीं वहाँ पर? हनुमान बांध से आगे कितना दूर है? और हनुमान बांध से ये स्वर्ण रेखा स्टार्ट होती है टिल जलालपुर। कितना डिस्टेंस है? 13 किलोमीटर। हाँ, तो आप हनुमान बांध के बाद वो क्या काम करेगा? इनको है
हाँ तो मतलब पानी लाने का रास्ता तो उन्होंने ले आए वो वहाँ तक, अब हनुमान बांध से आपने करना है। और वो फॉरेस्ट वाले कौन है? यस, व्हाट हैव यू डन अप टू दिस, अप टू हनुमान बांध? Up to Hanuman Baand, sir, 200 meter on either side we have identified the area और उसके लिए हमने fund requirements के लिए दे दिया है ऊपर, मतलब we have written। किसको दिया है आपने? सर स्टेट गवर्नमेंट को भी लिखा है सर और हमने नमामि गंगे को। बताइए मिस्टर मोदी को आप जी सर। बताइए कहाँ, किस, क्या चिट्ठी कहाँ है आपकी? वेयर इज द करस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू रिलीज ऑफ फंड्स? And sir, in the meanwhile, as the funds haven't been allocated yet, तो हम जो NGO और civil society के participation से we have started the plantation in that area। नहीं, वो दिन आने वाले हैं कि सरकार के पास पैसा है नहीं, खजाना खाली ऐसा दिख रहा है मेरे को, तो अब भीख मांगो, पब्लिक से पैसा इकट्ठा करो और पब्लिक का काम करो। So plantation we have started। अगर यही स्थिति बनने वाली है तो ठीक है फिर। चैरिटी का ऑफिस खोल लो एक यहीं कहीं पे और लोगों से कहो भाई पैसा हमारे पास है नहीं, पैसा दो तो हम प्लांट लगाएं। यही कहना चाहते हो आप? कितना फंड मांगा है आपने? सर हमारा टोटल जो पूरा कैशमेंट है उसका सर 74 crores का है सर। The entire cash। वो प्रपोजल कब भेजा आपने? That proposal I sent sir in November sir। Mr. Modi, take note of this also. Proposal to the Forest Department. Sir, to the National Mission on Clean Ganga we have also sent that proposal। है? सर क्योंकि वो river rejuvenation है, forestry intervention। तो किसको जा, who will release the funds? Sir, either National Mission on Clean Ganga, if they are not able to release the fund, then the state government, sir। Now, Mr. From the Namaami Gange, you are there na? Have you got the proposal? आप कहाँ, show me the document. फिर उसके बाद एक परसों लगा रहा हूँ। चलिए, हाँ क्या है, क्या आया प्रपोजल है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेजा भेजा है। है? हैं? नमामि गंगे को भेजा लेकिन ऑन रिकॉर्ड नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भेजा वो रिकॉर्ड। ठीक है, हम परसों लगा रहे हैं केस को। परसों सबको आना है यहाँ पे। मिस्टर मोदी, आई एम गिविंग यू 48 hours to find out Yes, whether the finance department has been consulted or not and how much funds allocation is in process. I am putting it. Today is Wednesday. We will have it on Friday or Monday. We will have it. Monday is the Monday is already. Tuesday. 16th we are here again. I am not passing any order today. 17th if your lordship. 17th, no problem, but ensure that. Realize you are additional advocate general and you don't wash away your hands saying that sir habne chithi likh di. If they do not hear you, you tell us frankly. So they don't bother to take our advice despite our sincere persuasion, then we know how to make them understand our language of the court. But I want you to now act as an additional advocate general in real sense, ensuring that they come out with substantial reply. No ipsy-dixy, no illusions. I'm not passing any order today. Come on 17th. Yes, our officer will deliberate with the officers of Whatever you want to do, I am not at all happy today.
You come back on 17th. List on simply order. I'm saying list on 17th. They all will be available. Other connected matter 40, 41. Regarding. Solid waste, that may be Yes, they will come back with complete review of all the 3 petitions, of subject matter in all 3 petitions. सबका नाम डाल के सब लोग हाजिर रहेंगे पर 17 तारीख को. सीरियल नंबर 40 भी करेक्टेड